hands and get ready for play. Engage my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and bright heritage. I shall always strive toward your faith. I shall give my parents, teachers, and elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion and their well-being and prosperity along that my happiness. Jai Hind. Good morning, Honorable Principal Sir, teachers and all dear my schoolmates. My name is Ayush Yadav. We are for class 10. Today I am presenting for today's Hindi thought. The thought is मनुष्य का आभूषण उसका रूप होता है और रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान होता है और ज्ञान का आभूषण क्षमा, अर्थात हमें जो कोई भी भूल करने पर क्षमा कर दे वही महान है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Good morning everyone, I am Jitmi. We are for class 10th A. Today I am going to tell some amazing facts. Fact number 1. The strongest muscle in our body is our tongue. Second, a spacesuit costs $12 million. Third, Saturn's rings are not solid. They are made up of bits of ice, dust, and earth. Third, space smells like seared stick, hot metal, and welding pumps. Thank you. Have a nice day. Hello, good morning to all of you, respected principals, our teachers, and all my dear schoolmates. I am Harshit Lal, we are class 10, and I am here to ask you some GK questions. The question for class first: which letter comes after L? L. Repeat. Correct answer L. Question for class second: 3 plus 10 equals to? 30. Correct answer 30. Question for class third: what is the birthplace of Lord Krishna? I repeat my question: what is the birthplace of Lord Krishna? Vrindavan. Correct answer Vrindavan, Mathura. Question for class 4: collection of stars forming a pattern in the sky is called a? Constellation. Correct answer constellation. Question for class 5: what is the capital of China? Correct answer Beijing. Question for class 6: who discovered electricity? Correct answer Benjamin Franklin. Question for class 7: the study of plants is known as? I repeat my question: the study of plants is known as? Question for all? Correct answer botany. Question for class 8: India is a tropical country. True or false? Wrong answer. I repeat my question: India is a tropical country. True or false? True. Correct answer true. The question for class 9: what is the nickname of Brian Lara? Three. Wrong answer. I repeat my question: what is the nickname of Brian Lara? Question for all. The correct answer is Princey. Question for class 10: after the decomposition of lead nitrate, a brown gas is produced. What gas is that? Correct answer nitrogen dioxide. Question for class 11: which city of Aurangzeb was sacked by Chhatrapati Sambhaji Maharaj in 1681? I repeat my question: which city of Aurangzeb was sacked by Chhatrapati Sambhaji Maharaj in 1681? Question for all. The answer is Burhanpur. Question for class 12: who is the director of The Dark Knight? I repeat my question: who is the director of The Dark Knight? Question for all. The answer is Christopher Nolan. Question for all: who is the founder CEO of Oyo? I repeat my question: who is the founder and CEO of Oyo?
The answer is Ritesh Agarwal. Thank you. I have a cheer for you. Candidates, attention. Candidates, attention. Now get ready for national song. Begin. Hindi essay writing competition. The result has come today, and I thank Ankit Kumar sir for taking the risk of conducting this exam. See, everybody is getting involved. I want that. So it's a collective working together of my staff. That is what makes me happy. In one way or other, you should improve. When you get a chance, try to improve and try to become mastermind of that. Because आप लोग है राजा रानी उस जगह का. मैं केवल एक सोल्जर हूँ, चलने वाला. मेरा टीचर्स लोग हूँ. तो आप लोग साथ देंगे, मेरा राज अच्छा आगे बढ़ेगा. Okay, good. So Hindi essay writing competition result. The first prize goes to Preeti Singh of class 11th. Preeti Singh of class 11. And second prize goes to Shreya of class 8. Class 8. And third prize in essay writing goes to Harshda Yadav of 10th class. So on behalf of the entire staff and the school management, I thank all these children to becoming champions, let us say masters of essay writing. May God bless you with a great knowledge. May He empower you with a great wisdom and understanding, so that आप लोग आगे आगे आपका भविष्य अच्छा बनेगा. मैं 2 मिनट और ले लूं? ओके, एक कहानी था. 2 माँ लोग थे. दोनों बच्चा का जन्म दिया. एक माँ का बच्चा जन्म होने के बाद मर गए थे. बेटा मर गया था, माँ थे. तो दूसरा माँ क्या किए थे, जन्म होने के बाद उनको बच्चे को रखे चले गए वॉशरूम में. तुरंत किसका बच्चा मर गया था, उसने वो बाबू को उठा के दूसरा माँ के जगह पे रखे. वो बाबू को लेके, चिंता वाला बाबू को लेके उनके पास रखे थे. कुछ समय के बाद वो मम्मी वापस आए थे और रोने शुरू किए थे. मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया.
सो ऐसा ऐसा दोनों लड़ रहे थे, दोनों मानो जिंदा वाला बच्चे को, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा जिंदा था, आपका बच्चा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सो दोनों को राजा के पास लेके आए थे, राजा के पास लेके आए थे। दोनों माँ, एक माँ का बेटा मर गए थे, एक माँ का बेटा जिंदा था। दोनों बच्चे को लेके राजा के पास आए थे। राजा ने पूछा था दोनों को, दोनों एक बच्चे के लिए लड़ रहे थे, ये मेरा बच्चा है, जिंदा वाला बच्चा मेरा है, मेरा है, मेरा है। राजा ने बोला मैं ये काम करूंगा, दोनों माँ के पूछा था, मैं एक काम करने वाला हूं, ये बच्चे को भी मैं मार डालूंगा, ये बच्चे को भी मैं मार डालूंगा। वो माँ, किसका बच्चा जिंदा था, उसने क्या कहा, वो राजा मेरे लिए बच्चा जरूरी नहीं है, वो जिंदा वाला बच्चा को उनको दीजिए, उसको मत मारिए पर उनको दीजिए। वो राजा का बुद्धि हो गया, साक्षात ये बच्चा ये माँ का है, साक्षात ये बच्चा वो माँ का है, इसलिए बोल रही है इनको मत मारिए, एटलीस्ट मेरा बच्चा जिएगा, उनके हाथ में दीजिए। कहाँ पे इनका ज्ञान से जजमेंट किया। इसलिए बच्चे लोग, आप लोगों को एक होता है विवेक, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप लोग बड़े बड़े बच्चे हैं, आप लोगों को जानकारी होना है कैसे जिंदगी आगे लेके चलना। तो ये कहानी हमारे लिए एक आइडिया देता है दैट वी हैव टू यूज हमारा बुद्धि। बहुत बच्चे इधर घूमेंगे, उधर जाएंगे, इधर करेंगे, वो करेंगे, नो, आप लोग का बुद्धि आप लोग यूज करना। ये जिंदगी एक जंग है, हम सबको यीशु भगवान ने वार्सोन में देखा है, लड़ो जुनून के साथ लड़ना, पढ़ो जुनून के साथ पढ़ो, कीप ऑलवेज योर टारगेट अहेड, आपका टारगेट आगे खत्म होना है, then you will reach your maximum. So always be good children. God bless you all. I invite